Thank you, Dr. Mishra, for the nice introduction. A very good morning to all of you. Thank you, sir, for inviting me today. And this is my first time to your esteemed university. And we'll just go through my current research within half an hour to let you know what we are doing. Am I audible at the back? Not audible? Okay. Hello. Hello. So am I audible now? Yeah, no, it is not running. I will turn it on. Hello, hello. Is this fine? Opposite side. Acha. Am I audible now? Okay, good. So again, a very good morning and thanks for the invitation. So I'm Pralay and I'm a professor in chemistry from IIT Patna. Already Dr. Mishra has given the introduction. So today I'm going to talk about a very recent progress. We have been doing some research on bioadhesives. This, you know, bioadhesive is a huge field of biomedical research, and we are just a small contributor to it. Um, Mainly, the bioadhesive field is dominated by cyanoacrylates, which are commercially available. What we are going to do, what we are trying is to find an alternatives. I'll tell you why. But as I move on, um, we are the first to introduce a very specific nanomaterial into bioadhesive, and that is carbon dot. So if you have to understand my subsequent presentation, you have to understand what is a carbon dot. So carbon dots are nano carbon form. Their size lies between 5 to 10 nanometer, and it was discovered by accident in 2004 by some Chinese researcher. So after that, in 22 years of its discovery, uh, carbon dots have garnered 26,500 plus publications in 22 years. The most number of publications on a nanoparticle. It has surpassed graphene, CNT, carbon nanotubes, all nanoparticles in terms of publications, which means that people have a very keen interest on this particular nano form of carbon. So 26,500 publications in 22 years is not a joke. Why people are interested? People are interested because they are easy to synthesize. At the same time, they have immense potential in every field. You go for electronics, you go for biomedical, every field it has find immense potential, and they are intensely fluorescent, which means that light applications are there for carbon dot. But out of these 26,500 publications, the authors of these publications, the unfortunate thing is that half of them don't know what products they have made, because there are slight differences. There are different products formed under these pyrolytic conditions under which these carbon dots are made. And I can guarantee you that half of the authors don't know the differences between different forms of carbon nanomaterials of this particular type. So I want to clear the air first. That's why I wanted you to know what exactly is a carbon dot. One variety is known as graphene quantum dot. A dot word is used. This dot word
signifies that there is some quantum confinement effect, which is partial and not and debatable. But it is a one-dimensional nanomaterial. That is why this dot word has been used for this particular type of carbon nanomaterial. One type is graphene quantum dot. Now, what is this graphene quantum dot? It has highly graphitized core, graphene-like structure. And the next one is carbon quantum dot, which is our domain, This carbon quantum dot is distinct from graphene quantum dot. Many people don't know because the carbon quantum dot contains amorphosity as well as graphene-like structure mixed up in the core. And another variety is carbon nanodot. These are spherical nanoparticles, very similar to graphene quantum dot, but are extremely spherical with carbonized core. Some new carbonaceous nanoparticle has evolved from carbon quantum dots, which are known as polymer dots. These are entangled cross-linked polymers making a core with dangling polymers outside, as the picture shows you. And a very interesting nanoparticle, which is brother of carbon quantum dot, has evolved, which is known as carbonized polymer dot. Unless you are an expert, you will not be able to detect what you have created, because these are synthesized under very similar conditions. And often authors, without characterization and purification, may not be able to tell what is what. So this carbonized polymer dot is in between polymer dot and carbon dot. So it has a core, it has a carbonized core, which is sp2 graphite core, along with dangling polymer chains. So you can see it can be considered as a hybrid of carbon dot and polymer dot. So having said that, understanding this slide is very important if you want to have interest in the subsequent presentation. So this is the material aspect which we are working on. And another then problem definition. Then okay, we have carbon dot, we have carbonized polymer dot, we have polymer dot, and they have immense applications. One application was left for me to respond, and that is the area of bioadhesive. Okay. So what is the requirement of this material? Deep cut, any accidental wound formation, bleeding. So what we do? We go to the hospital, we do the sieving. That is the most common remedy for stopping the bleeding and reinforcing the cut tissue. So this is suturing. We call it suturing. It's a very painful process. Many of us has experience. It's an invasive process and it causes a lot of pain. Not only that, it will leave a scar. After it's healed, the tissue is reinforced, it will leave a scar. And third and most dangerous thing is this suturing area is prone to infection because there is some open wound which bacteria like to feed on and microbes like to feed on. So the recent trend is using bioadhesives and biosealants. And because of the cost factor, we do not see bioadhesive in government hospitals. We still use suturing, but it is there in the market. If you go to any good city, you will find it very easily. The most abundant and most commercially available bioadhesive is the cyanoacrylate kind of bioadhesive, which works exactly like fevicol. There are some alternatives which has come up, which are based on fibrin proteins. Now, what is the problem with the cyanoacrylate? Cyanoacrylate upon disintegration is very toxic
It's very toxic. Number one, toxicity issue. Number two, it do not have any inherent healing property, which means that, okay, it can close the wound, it can stop the bleeding, that's it. It cannot prevent infection because it do not have any inherent therapeutic property. So how about a bioadhesive that will carry a therapeutic effect itself? We don't have to add antibiotics. We don't have to add any other medicines. It will heal the tissue. It will close the wound, reinforce the tissue, at the same time, supply the goodies for quick healing. Okay. So that is our main objective. And I thought that since carbon dots are being applied to various field of study, be it sensing, electronics, solar cells, and other studies, why not we introduce in bioadhesive area? So that is the main objective of our study. And one advantage which came into my mind for carbon dot is that unlike any nanomaterial, be it graphene, CNT, or metal nanoparticles, carbon dots, imagine them as golf balls with spikes. With spikes. Now, what is the spikes? These spikes are functional groups. These spikes are functional groups. And you know, function, if you have a functional group on a nano entity which you can control, then it gives you a major handle and advantage to use it in various applications. And as I am showing you here, the carbon dots, I can put any functional group on that by controlling the substrate. By controlling the substrate, the functional groups of carbon dot are derived from its substrate. For example, if your substrate has COH group, you can control the pyrolysis reaction in such a manner that your carbon dot nanoparticle will end up having COH group. So which gives me a major advantage that I can have any functional group on the carbon dot I want. And why I am emphasizing on functional groups? Because wound closure is nothing but a play of functional group and reaction, chemical reaction. Whenever there is a cut tissue, the functional groups on the skin are exposed. And you know what kind of functional groups are there? Amines, alcohols, thiols, which comes from proteins and muscles and lipids. So I can interact the functional groups of carbon dot with my functional groups of wounded skin and make things work for stopping the bleeding and reinforcing the tissue. So that is why I have chosen carbon dot. Another reason is that carbon dots can be prepared from biomolecules like proteins, lipids, DNA. We have prepared carbon dots from all of these important biomolecules, which means that unlike cyanoacrylate, their toxicity will be very less because we are using biocompatible biomolecules for their synthesis. So these two reasons, that availability of functional groups for good skin attachment and parallelly very nice biocompatibility. This is the driving force for our carbon dot, using of carbon dots in our bioadhesive. So we started with a very simple problem. We created a carbon dot. These carbon dots are synthesized in hot air oven with autoclave, this Teflon lined autoclave of this size, 20 ml, 25 ml. You just put them, add your material. It just works like a pressure cooker and seal it. The steel autoclave, put it in oven, keep it for 8 hours, 6 hours, whatever conditions you want to, and it's ready. Nothing else. Then you can purify and use it. So in our first available option,
we synthesized a carbon dot from two simple organic compounds. One is dopamine. You may have know about dopamine. It is a biomolecule which is known as the molecule of joy. It is derived from amino acids. It's present in our body. And another one is erythritol, which is a dialdehyde, So out of millions of organic molecules, out of millions and millions of organic molecules, we have chosen only two molecules, very simple two molecules. I'll tell you the reason why. So we end up with a carbon dot. We end up with a carbon dot having acidic group, COOH group, OH group, NH2 group. And the most important is that CH2 group, aldehyde group. So having a aldehyde group on a carbon dot is not easy, because aldehydes are known to be very labile. They are very easily oxidized to acids, very easily reduced to alcohol. So aldehydes are considered as very labile group. So under pyrolytic condition, maintaining and retaining the aldehyde groups from erythritol is a challenge, and we have solved it. I can proudly say no carbon dot was synthesized before us with a aldehyde group. And what is the characterization technique to show the world that we have done it? We have NMR of this carbon dot to show that aldehyde groups are present there. We also have FDIR and other characterization techniques. So now you know why these aldehyde groups are present, because I just told you that skin has many functional groups like thiols, amines, and alcohol. And aldehydes are excellent reactors for connecting to amines, thiols, and alcohols. Stick to the skin. Moreover, this carbon dot we did not use as such to formulate the whole bioadhesive. We used a matrix. And what matrix we used? We used gelatin. The same gelatin which you eat on birthday cakes. Gelatin is an edible protein and it is a biomass source. So we just use this edible protein to connect this carbon dot and make a cross-linked network which looks like very much like this, with the sheep-based formation with amines of gelatin and aldehydes of the carbon dots are being used. So now this material is a very sticky material and has all characteristics of a good bioadhesive. So we have used dopamine and erythritol converted into carbon dot, and in the next step mixed with gelatin, left it for few hours, no heating, nothing required, everything happening in water, green solvent, made a cross-linked polymeric material with embedded carbon dots inside, which will do the magic. And the result is shown, as you can see. We resulted in around 5 to 6 nanometer of carbon dot were produced, and the size increases as gelatin gets attached to the carbon dot and ending up with the main material for the bioadhesive. And I will show you where we have applied this material. So this is how it looks like. Solution of gelatin, very much free pouring and non-viscous. And you add CD and gelatin after 8 hours or 6 hours, you get the bioadhesive. You can see the viscosity has increased drastically. And that material, the FESCM picture is shown here. Beautiful porous network. Beautiful porous network. So that porous network hints at something else, that this porous network
can hold on to some drug molecules if I want to use this bioadhesive, which means I am taking the cyanoacrylate version of commercially available bioadhesive one step further and is able to incorporate a drug molecule for proper healing into my bioadhesive matrix. Number one advantage. Number two advantage, this material is self-healing because the sheaf bases between the gelatin amine and the CHO of CD, they gets formed automatically. So you cut open that bioadhesive, you just physically tap them and it will get joined. So this is a property which is known as self-healing property because our skin and tissues are not plain and we have movement. We have movement near the joints. So if there is a cut, the bioadhesive should be self-healing because it will stretch and do like this. So this self-healing property is very important for bioadhesive because our of our movement. It should not get dislocated. That is which we have already achieved. And second thing, as I have mentioned you, we tried a drug as a model drug, hemin, an iron contained porphyrin ring. Hemin has some therapeutic value. Just to show the world that I can put any drug molecules embedded into my carbon dot gelatin bioadhesive. We put some hemin drug and we can see that it is released sustainably, very slowly. Sustainable release is a dream for drug delivery people. So for 12 days, the hemin is being delivered slowly on the wounds. And last but not the least, we tried the adhesion properties. It shows excellent weight adhesion. Our skin is wet because our tissue is aqueous medium. So weight adhesion was tested on porcine skin, weight out to be very decent. Okay. So, but the most interesting thing is yet to come for this. We have already told you three advantage we already obtained over commercially available cyanoacrylates. This is your PropTag test, which showing with porcine skin, with pig skin, that the bioadhesive require decent amount of force to be detached. And the adhesive strength was measured as around 0.6 megapascal, which is lower than cyanoacrylate. Cyanoacrylates have better adhesive strength, but there is trade-off. You cannot have everything. You cannot have everything. Cyanoacrylate cannot hold on to any drug. Our cyanoacrylate is not self-healing. Ours is self-healing. But the adhesive strength, to be frank, is little bit lower than cyanoacrylate. But what cyanoacrylates do not have, we have it, is that the CD, which is light sensitive, and if I shine a light, the CD gets excited, generates reactive oxygen species, kill any bacteria which is present. Just showing this with the bioadhesive glue, you can see that both gram positive and gram negative bacteria can die because the CD has the unique property. If you shine a light, it will produce reactive oxygen species like superoxide, hydroxyl radical, and this will kill bacteria, which means that we have achieved an excellent feat which cyanoacrylate do not have, which is self-sterilization. No antibiotic is required. You shine a light for 10 minutes, leave it, forget it. No bacterial infection will happen because the CD will generate some reactive oxygen species and it will kill all the bacteria. So this was our very first publication which reports this finding in this SCS Biomacromolecules journal. But we are not happy with our own results because we wanted to improve. So we thought like how to improve. We use now carbonized polymer dot.
remember my first slide. The one which was just told you was carbon dot. But this particular work used carbonized polymer dot, which we call as CPD. And this CPD was created in two steps. In two steps. Unlike the last one, first a CD was created by using dopa, fluoroglucinol, and glyoxol. And this CD was reacted with gelatin under pyrolytic condition at 150 degree. So it is a two-step pyrolysis. Unlike the last one, this one is two-step pyrolysis. It creates a carbonized polymer dot. This cartoon picture actually depicts a very nice view of how it looks like, where the dots are the carbon dots and the gelatin sticks are like the protruding chains. And the bioadhesive was obtained by adding tannic acid as a grafting material. So now we have a CPD tannic acid bioadhesive, which looks very much like this. This is the FESEM image, and this is your carbonized polymer dot tannic acid bioadhesive. So this is a two-step process which we followed, and then we found excellent rheological behavior where lab shear test shows 1.3 megapascal of strength, which is equivalent to cyanoacrylate. Very much. Cyanoacrylate is around 1.4. Okay. And then we tried in porcine skin the debonding and bonding studies and probe tag test. Everything was improved. The stretchability was excellent, which means it is self-healing and it can stick to glass, plastic, paper, rubber, gloves, so on. This bioadhesives has high adhesiveness. Okay. And but most importantly, here also we are able to generate ROS by shining a 40 watt LED, not very high source or UV light. There's only a LED of 40 watt. We are able to generate ROS and kill bacteria, which means this becomes again self-sterilizing. But there is another thing which we have achieved because of the presence of tannic acid. As soon as you withdraw the light, the ROS generation stops and reverse takes place. ROS scavenging. The material can eat up ROS in dark conditions, which means a same material, shine light, generate ROS, switch off light, scavenge ROS. So this is a dual property which is not common in a single material. Now, why I am emphasizing on this ROS regulation? Shine light, ROS generation, dark, switch off, ROS scavenging. It is very important in wound healing. Many of us don't know. It is being researched intensely and is established that when the cut is there, fresh wound, it requires our body produces a lot of ROS in that wound area. It is a self-defense mechanism to kill bacteria themselves. It is a self-defense mechanism. We may not know, but it feels hot sometimes when fresh cut. But during the later process of healing, ROS should not be there. It should be less, because less ROS promotes collagen formation, fibroblast realignment. So the theory is pretty established. Initial stages of wound requires ROS. Later stages of wound do not require ROS. And we can perform these two functions with the same material. Initial, you add your bioadhesive in the wound area, you keep on shining light for 10 minutes interval, and in the later part of wound healing, you cover it with a dark cloth so that you don't expose it to light, and the ROS will be scavenged automatically. So this is a beautiful effect which we got, and we showed that not only in normal cells,
in diabetic cells also, because you know that diabetic wounds takes much more longer time. People with diabetes have very high risk of wound infection because it takes longer time for them to heal. So we have shown here that to cell scratch assay, that not only in normal conditions, under diabetic conditions, the formation of cell is faster and the wound closure is very fast using this material. So this is the progress where you can see the gap is reducing, which means new cell formation closing the wound area. So this cell scratch assay proves that the biomaterial developed herein is an excellent material without the possibility of any infection. We reported this in a very prestigious journal, in small, and was uh, like, wow, that is working. Our theory is working. It's good to see that. So when you get this kind of results, your ambitions become more and more. So in this particular work, we say that earlier we used two-step. In our first, if you remember, in our first study, our adhesive strength was only 0.6. The next was only 1.32. If we can increase the adhesive strength and decrease the number of steps, because that is what commercialization is, right? Easy synthesis with higher giveaways. So this is an example where we have used a single step, used gelatin. We stick to gelatin because very of its biocompatibility. We use acrylamide in a single step, 180-degree, 8 hours, pyrolytic conditions. We create a proteinaceous nanoparticle. We call it PNP nanoparticle. So this PNP nanoparticle is nothing but a polymer kind of dot with gelatin and acrylamide. Single step. And here we have achieved the same bioadhesive but with more adhesive strength. And we did in vivo studies in mouse model, and we proved that in comparison to commercially available Captosil, which is a bioadhesive, our PNP sealant is kind of parallel, if it is not outperforming the commercial variety, but kind of parallel. Okay. So, but one thing again, Captosil cannot do self-sterilization. We can do self-sterilization. We have proved this now in 4 different bacterial strains, which Captosil cannot do. But the wound healing performance is a little bit, you can see after 7 days, this is showing a little bit, but Captosil is better performing. But our advantage is that we have generated ROS without requiring any antibiotic. It will be infection free. So the transition has happened. First, CD was used for our bioadhesive, followed by carbonized polymer dot, and that is followed by protein nanoparticle using a single step reaction. And the adhesive strength now is around 1.5. It is better than Captosil acrylates. Last achievement which we have recently achieved, is that we use the same gelatin. We use the same acrylamide. Earlier it was gelatin acrylamide single step, but here we just added a little bit of dopamine, a little bit of dopamine. And this dopamine has done a magic with this OH and NH2 group. Similar conditions. Protein polymer dot, bioadhesive, no synthetic polymer, totally protein-based polymer, and that too a edible protein polymer dot. See, this protein polymer dot shows the similar characteristics, if not better, than self-sterilization, metal-free nanoenzyme activity, ROS generation and ROS scavenging simultaneously. And now we can see that this protein-based nanodot has
outperformed the commercially available one. So you can see on up to day 21, we have recorded, this is the control which has not used any medicine or bioadhesive in mouse model. This is Lycomond, another bioadhesive, and this is our protein nanodot. So you can see it is better performing. It is better performing than the commercially available one. So a modified formulation is being applied for a patent right now. So, and one thing is that it is, you can see, it is scarless healing. Remember, I told you that suturing leaves scar, but this is scarless healing along with ROS scavenging and simultaneous ROS formation on exposure to 23 watts light. So the journey is continuing. We are working continuously. Right now, we are working on soy protein, which is again a biomass-based protein to develop some new generation of bioadhesives. So what I have shown you today, to summarize it, is that we have ventured into carbon dot, followed by carbonized polymer dot, then a protein nanodot, and then finally a protein nanoparticle, ever evolving the adhesive strength, finally ending with 2.3 megapascal of adhesion, which is much higher than any commercially available variety. So this has very recently been published in ACS, a very prestigious journal. So this is what I have just told you is a mini evolution, which like a small chemist can do. So we have evolved slowly, improved slowly, and will continue to evolve. So thank you very much for your attention. And I'm thankful to my institute at Patna, and this work was completely supported by PMRF, Prime Minister Research Fellowship. And the recipient is Mansi. She is the one who has done all this work. This is just her work I have shown and is under the PMRF scholarship. And thank you again. So I'll be happy to respond to any question if there is time. Yes. This is really a wonderful work. There are certain issues which I would like to raise from mechanistic point of view. Number one, all processes are hydrothermal. Yes. Okay. And initially you are calling them carbon dots, but it should be called functionalized carbon dots. Yes. Okay. Secondly, you are having stabilized functionalized carbon dots. And then very carefully, whether it is done intentionally or you have done by chance, when you are going for the proteinous nanoparticle, you are essentially making two things. You are having functionalization, you are having stabilization. Yes. So this whole property is due to the dual things done in single pot. Absolutely. Thank you. Absolutely. Yes. And we have done it intentionally because I would like to check. You have not shown, you have shown only the FSM. If you see the cross sections with TAM and SAED, then probably we will see these porous sections that yes, you are seeing. I have not shown it here because okay, of time, okay. but you have correctly pointed out. Yeah. So there is porosity. That yes. porosity, and what my interest is, if you change slightly the ratio, this porosity may be more distributed. Highly changed. Yes, Highly. absolutely, Yeah. absolutely, absolutely. Yes, sir. Next. So wonderful work, sir. I have few queries. Like you are using, like sir also told, like the quantum dot itself is like functionalized, right? The Yes. surface is having COH group. So when you are going for like sealing or something like, so how you feel like it is different from stitching process? Like because it the timing I would like to know, right? Because
if you're sealing with your quantum dots and gelating, so it may be taking too much time. No, So no, no, no. if you are going for surgical operations, in that case, people prefer for stitching, right? So my first question is like, how much duration you think like stitching or this one will be? And the second, I would add one more question. So what is the impact when you are using the quantum dots for this process, like wound healing, that way? So you are telling like it is means killing the germs and other things. So the same time, it may also affect the normal cell which Yes, are yes, replicating. you have asked Yeah. two very valid questions. Yeah. Huh. So that's it. And we know this question will come. Okay. Uh, so uh, when you are using this mosquito gun, mosquitoes are dying, but we are alive, right? But in the same room, if I use this gun for 15 minutes and make you stay here, we will die. Because if mosquito can die, we can also die. But when this is done, we are not dying, only mosquitoes are dying. Depends on dosage. Depends on dosage, right? So it depends on that how long you are irradiating, and under that conditions, only bacterial cells will be affected. But cytotoxicity assay have shown us that there is no harm to ROS. I mean, to us, to mammalian cells. Okay, so it all depends on dosage, just like that. Then about that functional groups, this our material is intended for open wounds, superficial open wounds. Superficial open wounds. Suturing is required when you have very deep wounds where some capillary has been damaged and you need to reinforce the tissue immediately. That is suturing when it is required. But again, around 2-inch wounds, which can be managed without suturing, this is a better option. We just don't use it because it is much more costly and availability is less. But in Western countries, suturing is done very less. Now, right now, every hospitals have these bioadhesives. We don't have because of the costing factor. The last two trials are done on mouse models. The last two ones. So where we have got the maximum product achieved. Yes, yeah, yes, sir. Actually, it was done in collaboration with Veterinary College of West Bengal. And ethical permission is, that's the main problem with our institute. We do not have any animal facility. Excellent talk, sir. I have one question from chemistry point of view. So many functional group is stabilized at very high temperature hydrothermal without a capping agent. You have not add any capping agent. No, no. So no. how, from chemistry point of view, how a 3-4 functional group is still stabilized after a high temperature hydrothermal function? See, this hydrothermal process, it proceeds in a two-step reaction. First is condensation and then polymerization. And if it depends on what is the temperature and time you are giving. So for example, I will say citric acid is an excellent material which has OH groups, COH groups. How they are retained there? It is about controlling the temperature. If you use a temperature which is say 180 to 100 degree, you will lose many functional groups. So that's why the temperature is lower, so that even if you lose some, you retain some. Very carefully, they are not telling. He is not telling many things. They are choosing very carefully the proteinous material, which have many functional groups. Yes. Make amino alcohols or amino acids. So have you tried with chiral also? No, because Thank you, sir. our idea is to apply them in bioadhesion and to get the projected functional groups.
since we are not going into any particular synthesis ahead, No, so it just, does not just, matter just to us. take to in because if you have that particular compounds, maybe you have some orientation and other. This here it does not matter. Okay, it does. But we have checked with a different application area in catalysis where that matters. What you are telling, it Okay. matters. In catalysis application, it will matter. Any more questions? So thank you so much. What a wonderful work and wonderful presentation. In order to felicitate, sir, I would like to call Professor Rabin Singh, sir, to kindly come and felicitate our keynote speaker, Professor Pralay Das, sir. So we have informed him, but he has some engagement. That's why he has gone. Hmm. कहाँ तुम लेके गए उसके बाद दिए कहाँ हो गया कैसे बात करते हो ना नहीं दिए कहाँ In the first session today, the next speaker is Dr. Rakesh Kumar Singh. About Rakesh Kumar Singh, is the head of the department, head of the University Center of Nanoscience and Nanotechnology at Arjbhat Knowledge University, Patna, a position he has held since 2014. He has also served a significant administrative roles, including Registrar and Proctor of the University. A major achievement of his career is the establishment of 7 world-class nanomaterial research laboratories at AKU. His research is primarily focused on nanoscience and nanotechnology with a specific emphasis on the waste to wealth concept. Key highlights of his work include the green synthesis of calcium oxide nanoparticles and 7 novel magnetic nanomaterials which have been recognized by the International Center for Diffraction Data. USA, Dr. Singh has published over 150 research papers, holds 9 patents, and he's mentioned multiple startups in nanotechnology. His academic impact is reflected to over 2,300 citations and he high index of 27 plus. His contribution have been honored with the Chancellor Award for Best. Additionally, he has served as a master resource person for United Nations proclaimed international years and is with the Nano Anveshka Network of India. So, sir, Rakesh Kumar Singh, sir, please come and join the dash. JP Invest. Yeah. There.
Hello, sir. ये वही स्कूल में मिल रहा था जो आपको पैसा दिया तो दीजिएगा ना 5 के था 5 सची से बात करें सच मंगवाई पढ़ाने वाले क्लासेस आपको तो खैर वहां गैस पर मिल गया लाइट बढ़ेगा कहाँ से आपका? कहाँ से बढ़ेगा? यहाँ से? हाँ, ये मेरा इसी में ठीक ठीक यहीं से। Okay, good morning, one and all. I am thankful to inviting this international conference, and especially thankful to the all organizing committee members of Department of Chemistry, Jayaprakash University, Chhapra. On this occasion, I have especially chosen the topic of my talk who are relevant to the local resources. Although we are working in different areas, the magnetic materials, ceramics materials, nanomedicines, and this. But what are the possibilities of innovation in this area that can we do as a teamwork? Therefore, I have chosen this topic as an environmental conscious calcium oxide nanoparticles from West Axle. You can see this is the topic of research, maybe from the area west to wealth and knowledge. We will hide how many applications are possible in this area. Before starting my lecture, first this is my courtesy to acknowledge my mentors from which we have been associated till date. I started my research career with Professor H.C. Verma, the IIT Kanpur, and still I am associated as his senior resource person and working for not only nanotechnology but at all levels of studies of physics education and related innovations. These are my research group. I am thankful because I am presenting my work, my students. Till date, I have guided 14 PhD students and about 57 AmTech students and 39 undergraduate students under college with potential for excellence scheme. Now, before starting, I am MSc Physics and PhD in the field of specialization nanotechnology. Generally, people ask, ये क्या आप दिखाते हैं अंडे का छिलका तो धान का भूसा दैट दिस ये दिस क्वेश्चंस आर जनरली आस्क. तो मैं खास करके यंग माइंड्स के लिए एक सीडी में एक लेक्चर्स है मेरी ये सब लोग इनको देखे होंगे आप लोगों ने. ये इनकी तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट हैं. एक शायद आंध्र प्रदेश के किसी छोटे मोटे ग्रामीण कॉलेज से इन्होंने बीएससी और एमएससी फिजिक्स किया और पीएचडी इनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, लेकिन नोबेल प्राइज मिलता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. व्हाट इज हिज स्पेशलाइजेशन? एक बार प्रश्न होता है आज के दौर में, आप इस एरिया के हैं, काम इस एरिया में कर रहे हैं. जैसे आई डिड माय एमएससी इन फिजिक्स, पीएचडी नानो साइंस. मैंने आज तक एक भी फिजिक्स के एरिया में पीएचडी नहीं करा पाया. सारे बायोटेक्नोलॉजी तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स दैट दिस आयुर्वेदा. तो ये दिस इज द ट्रेंड ऑफ 21st सेंचुरी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में कहते हैं. ये नेशनल एजुकेशन में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात कही है, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कहते हैं. तो ये दुनिया 21वीं शताब्दी का विज्ञान ऐसे ही चलता है.
कि मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया आप केमिस्ट्री में है, जैसे अभी सर दिखा रहे थे प्रलय दास सर, कि एक मटेरियल्स के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, सारी चीजें दिखती है. दैट इज अ पोरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट पोरोसिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज, आयुर्वेदा एंड एग्रीकल्चर. तो एक मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाया. दिस इज वर्ल्ड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, और दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी. दिस वेल नोन कि हम लोग पूरे जानते रहे कि मटेरियल्स का साइज जब छोटा होता है तो उसके सरफेस इफेक्ट बदल जाते हैं, क्वांटम कन्फाइनमेंट अंदर के बदल जाते हैं, एंड प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली चेंज करता है. ये सब तो हम लोग बहुत बेसिक से जानते आ रहे हैं, और 2 डेज लेक्चर्स में ये सारी चीजों को आप देखे भी होंगे कि पार्टिकल का साइज आप देखेंगे जैसे जैसे छोटा होता है उसके सरफेस रिएक्टिविटी बढ़ती है. एंड सच प्रॉपर्टीज आल्सो इन द पिकॉक आप देखे होंगे, बटरफ्लाई, ये से सारी चीजें उसमें होती हैं जो मल्टी कलर प्रॉपर्टीज को शो करता है. एंड एक बातें हैं जो नैनो को हम लोग समझते हैं कि नैनो पार्टिकल्स मतलब छोटा. छोटा मतलब 10⁻⁻9 मीटर. हाउ मच 1 10⁻⁹ मीटर. अब 1 मीटर कपड़े आप खरीदते हैं, देखते हैं, और उसका सोचिए 10⁻9 पार्ट कितना छोटा होगा. हमारे आंख की एक सीमा होती है. यंग स्टूडेंट पीछे, मैं विशेष रूप से आपको देख रहा हूं, तो उसने छोटे स्केल के पार्टिकल्स को हमारी आंखें नहीं देख सकती. हम अपने एनिसेंट विस्टम को देखें, ये बॉल मिलिंग मशीन आप देखिए, बगल में एक ग्राइंडर मशीन रखे हैं जिसको बिहार में लोग जाता बोला करते हैं. आप लोग शायद देखे हैं या ना देखे, वो ग्राइंडिंग मशीन जो गांव में महिलाएं या कुछ लोग यूज करते हैं. तो द पर्पस टू हैमरिंग फिजिकली टू प्रोड्यूस स्मॉल क्रिस्टल्स. द सेम प्रिंसिपल वाज यूज्ड बाय द ये हाई एनर्जी बॉल मिलिंग, जिसके तहत छोटे छोटे पार्टिकल्स को बनाते हैं हम लोग, नैनो स्केल पार्टिकल्स भी बनाते हैं. मैं ये देखिए रेड कलर की हल्दी मैं दिखा रहा हूँ. दीज आर माय पीएचडी स्टूडेंट्स जो 2016 में पास कर गए मेरे साथ, और ये सारे रेड कलर की हल्दी बनाए. हल्दी तो पीले कलर के होते हैं, फिर ये रेड कलर की हल्दी कहां से आ जा रही है? जब मटेरियल का साइज नानो स्केल्स पे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन उसके अंदर बदलता है, तो लुमिनेसेंस प्रॉपर्टीज उसकी पूरी बदल जाती है. Therefore, this is red color turmeric powders को आप देख रहे हैं. This is the one of the also properties of nanoscale behavior. जो हमने कहा कि पिकॉक देखें डिफरेंट कलर्स होते हैं, बटरफ्लाई डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो दिस आर द नेचुरल नैनो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इन नेचर. बट ये इस तरह की चीजें होती हैं, और ये दैट वी कैन थिंक कि द हमारे एनिसेंट विस्डम में जो वो ग्राइंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट को ये जो इक्विपमेंट है, जर्मनी बेस्ड इक्विपमेंट है ना, जिसको वो आइडियाज को कंसीव किया और एक इक्विपमेंट बना दिया. और वो करीब अभी ये मैं तो खरीदा था 45 लाख में, अभी इसकी कीमत लगभग 65 लाख है. तो ये कीमत पूरे आइडियाज को आप कन्वर्ट करते हैं इनोवेशंस में, कॉमर्शियलाइजेशन. तो इस तरह की चीजों को हम एक इस छपरा एरिया में इस तरह के कामों को कर सकते हैं. छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के कामों को कर सकते हैं, जहां एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रिसर्च का, इनोवेशंस का नहीं है, ये कर सकते हैं. नो, अब नैनो को समझने के लिए एक चीज देखें. दिस इज द हाउ दिस नैनो पार्टिकल्स इज फैक्टिक. मैं एक नैनो मेडिसिन का एक्शन आपको ओनली पिक्चोरियल के दिखाने के लिए, कि जब आप किसी बॉडी में कोई बीमारियां होती हैं, व्हाट कैन यू डू, हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट खाते हैं, और दैट टैबलेट खाने के बाद बीमारी तो एक ठीक करता है, और साथ में वो दूसरे बीमारी को भी आपको जन्म दे देता है, साइड इफेक्ट. लेकिन अगर एक छोटे नैनो मेडिसिन हैं, वो क्या करता है, जहां बीमारियां हैं वो वहीं जाके बीमारी अटैक करता है, बाहर से हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड वगैरह अप्लाई करते हैं. हाँ, तो इसको समझने के लिए एक ये ड्रग को डिलीवर कर देता है. दिस इज अ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन. बट इस तरह के गुण, आपने भस्म का नाम सुना होगा, आयुर्वेदिक भस्म. इस भस्म को कभी आपने सुना है कि छोटे बच्चे को शहद के साथ भस्म देने से उसकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है? उसमें उसमें इस तरह के टारगेटेड डिलीवरी का गुण होता है, और वो जो शहद होता है वो कैरियर का काम. कहते हैं कि जो चीजें वेस्टर्न कंट्री आज सोच रहा है, हमारा एनिसेंट विस्डम हजारों साल पहले उस चीज को किया है. बट एट दैट टाइम मॉडर्न इक्विपमेंट्स वेर नॉट अवेलेबल,
है ना, मॉडर्न टूल्स वेर नॉट अवेलेबल जिसको हम साइंटिफिकली प्रेजेंट कर सकें आपके सामने। तो ये सारे गुण उस भस्मों में होता है। मैं कुछ भस्मों को आपके एग्जांपल्स बताऊंगा। नाउ दिस नैनो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी आर सराउंडेड बाय गॉड एंड गॉडेस। हर एक देवी देव कहते हैं सूक्ष्म शक्तियां पूरे नेचर में मूव करता है। कोरोना वायरस को किसी ने नहीं देखा, बट देयर नैनो मटेरियल्स, है ना, 80 नैनोमीटर्स का पार्टिकल साइज था कोरोना वायरस का। तो दिस जितने भी देवी देवता हैं उसके पास भी ये सूक्ष्म शक्तियां नैनो मटेरियल्स प्रॉपर्टियां मौजूद होती है। आप देखें वो भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, आप कैल्शियम चौक से लिखते हैं और शंख भी बजाते हैं, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, लेकिन आप चौक को तोड़ देते हैं, शंख को नहीं तोड़ पाते, बिकॉज शंख के अंदर वो नैनो स्ट्रक्चर बिहेवियर है जिससे उसकी मैकेनिकल हार्डनेस काफी ज्यादा होती है। हाँ, उसी तरह पिकॉक के अंदर कमल के पत्ते, लोटस लीफ ऑलवेज क्लीन इटसेल्फ ड्यू टू नैनो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। दिस लोटस लीफ, बटरफ्लाई, पिकॉक्स, सी सेल, in all these material the nano structure behaviors. So the nano not in nature, nano not in laboratory, nano not in a classroom, but nano is also surrounded by God and Goddess. हमारे सारे देवी देवता के पीछे भी ये सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म मटेरियल रहती हैं, तो देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अब हम आते हैं जो हमने टॉपिक्स दिया था, ये एक ही टॉपिक्स, एक ही मटेरियल्स पर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को थोड़े शो करेंगे। थोड़े मैं मैथमेटिक्स को कम कर दिया हूँ, कैलकुलेशंस को कम किया, मेजरमेंट को कम किया हूँ, एप्लीकेशंस को मैं, स्टार्टअप्स एक्टिविटीज को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस पर दो स्टार्टअप्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स दो स्टार्टअप्स कर रहे हैं जो प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाने की कोशिश किए हैं हम लोग। ये कैल्शियम ऑक्साइड नैनो मटेरियल्स अंडे के छिलके में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट आइडिया कंसेप्ट फ्रॉम आयुर्वेदा, कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इस अंडे के छिलके को कूट के, पीस के, उसमें लेमन आलू मिला के वो दवाई का सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन वो काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, वो नैनो है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ये पता नहीं। बट हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया और उसी वेस्ट एक्सेल को हमने उनके साथ मिलके नैनो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से काम करना शुरू कि देखिए उसके अंदर ये इफिकेसी है, तो किन कारणों से इफेक्सी। तो मैं एक छोटा दिखाऊंगा, वेस्ट एक्सेल मुर्गी के अंडे का है। ये मैं एक एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाता हूं वनली, कि ये जो मटेरियल है, दिस मटेरियल आर द नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल, डिफरेंट साइज होते हैं। आयुर्वेदा में एक चीज जो हम लोग बोलते हैं, हीटिंग, क्वेंचिंग, ये सब नाम सुना हो आप लोगों ने, गर्म करना, ठंडा करना। तो ठंडे करने का आयुर्वेद में क्या है, उसको कहते हैं पुत्ता, कहते हैं पुत्ता। तो वो जो ठंडे करते हैं वो लोग लिक्विड मीडिया में करते हैं, कोई लेमन है, एलोवेरा है, बटर मिल्क है, इस तरह से। तो व्हाट आर देयर साइंस बिहाइंड, कभी चरक ने कभी लिखा 5वीं शताब्दी में कभी, लेकिन हम रिचर्ड फाइनमैन की बातों को हमेशा याद करते हैं, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। लेकिन कि जब छोटे स्केल पे आते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम उनको याद नहीं करते हैं, चरक को जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ मटेरियल इस तरह से प्रोसेस होता है हीटिंग क्वांटिटी से, किसी भी मटेरियल का साइज, क्रिस्टल साइज बदलता है। तो ये डिफरेंट तरह के जो हीटिंग क्वेंचिंग है, ये बनाने की विधि हमारे आयुर्वेद में मेंशन है, लेकिन वो नैनो बनेगा ये बातें वहां मेंशन नहीं है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमारे पास 2000 के बाद इंडिया में आता है। हाँ, नैनो मिशन इनिशिएटिव हमारे 2007 में भारत में शुरू होता है। तो दिस मीन्स ओनली वी हैव सो कि इस प्रोसेस से हम बनाते हैं, और इसको आयुर्वेद में कुकु तांडवक भस्म भी कहा जाता है। कुक मतलब मुर्गी, भस्म मतलब दीज आर इन मॉडर्न टाइम्स की नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो वो मुर्गी के अंडे से जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग कुकु तांडवक भस्म कहते हैं, और हम लोग मॉडर्न टाइम में इसको कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में यूज करते हैं। और ये मैं दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने इस पर वाटर फिल्टर बनाया है, ये हमारा पेटेंट है, इस पेटेंट को हम लोगों ने पब्लिश किया है। और ये दिस इज द मल्टी फंक्शनल कैल्शियम ऑक्साइड नैनो मटेरियल से इस चीज को तैयार किया। अब एक प्रश्न होता है कि पेटेंट होने से क्या होगा। आपने हम लोगों से एक बड़ा, चूंकि हम बिहार में रह के ही, रविंदर सर हमारे सामने बैठे हैं, हम लोगों को बचपन से देखते हैं,
रिसर्च का पहला प्रश्न बिहार में होता है, आपके रिसर्च से क्या मिला सोसाइटी। हाँ, पेपर आपने पब्लिश किया इंटरनेशनल, सो व्हाट, पहला प्रश्न लोग करते हैं। आप खास करके अगर राजनेताओं के पास जाएंगे तो पहला प्रश्न करेंगे आपके रिसर्च से क्या बिहार को मिला, देश को क्या मिला, पहला प्रश्न होता है ये चीजें। तो हम लोगों ने इसकी पूरी साइंटिफिक स्टडीज किया, और साइंटिफिक स्टडीज के बाद हम लोगों ने इसको पेटेंट किया, और पेटेंट प्रोसेस हमारा फाइनल होने जा रहा है, उसके पहले हम लोगों ने इसका डिजाइन वाटर फिल्टर का किया, आर्सेनिक और फ्लोराइड को ऑब्जॉर्व कैसे करता है। तो उसका कारण क्या है, इसके इसके अंदर में जो हमारी पोरोसिटी है, जो हमारा सरफेस रिएक्टिविटी बढ़ता है, उसके कारण इसकी आर्सेनिक और फ्लोराइड को रिजॉल्व करता है। और मैं इसके मॉडल्स को दिखा रहा हूं आपको, ये दीज आर, ये हमारे वाटर फिल्टर का डिजाइन है, जिस डिजाइन को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की मदद से इस वेस्ट एक्सेल से इस वाटर प्यूरिफिकेशन पर हम लोगों ने काम किया। वेरी लो कॉस्ट नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर फिल्टर, जिसको बनाने का खर्च हम लोगों को लगभग 150 पड़ता है ना। दैट मीन्स एक वेस्ट मटेरियल को हम वेल्थ और नॉलेज में लोकल रिसोर्सेज को यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के आसपास लोकल वेस्ट मटेरियल कुछ हो, उसको हम कन्वर्ट करें नैनो में, फंक्शनल नैनो मटेरियल्स में, तो दैट मे बी ए बिग अचीवमेंट, है ना। तो मैं इसके बहुत साइंस में नहीं जाऊंगा कि कितना एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ओनली आई शो कि दिस बिहेवियर वर ऑलरेडी फाउंड एंड पेटेंटेड, दिस इज द वाटर फिल्टर डिजाइन। ये हमारा वो साइंटिफिक स्टडीज है, कैसे कैसे कितना एब्जॉर्ब करता है, कितना मिनट में क्या जाता है, दैट इज नाउ सेकंड एप्लीकेशंस जो हम लोगों ने जनरेट किया, नैनो फर्टिलाइजर्स। हाँ, अब ये नैनो फर्टिलाइजर्स, व्हाई नैनो फर्टिलाइजर्स, अंडे के छिलके पर डे तो 10 ट्रक कम से कम छपरा शहर में भी फेंके जाते होंगे। That means only difference is that what calcium oxide nanometers we have used in purification of water, the same material was ball milled for 5 minutes only. The surface reactivity was found changes and useful for the growth of a plant. These are my only 3 M.Tech students जो हमारे साथ काम किए हैं लास्ट में, और these are my PhD students जिसके साथ मिलकर ये नैनो फर्टिलाइजर्स हम लोग बनाए। These nano fertilizers already in process of commercialization, है ना, और प्रोटोटाइप्स हमारा डेवलप है। हर एक चीज का पेटेंट्स बहुत जरूरी नहीं होता है, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द नैनो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड वेस्ट मटेरियल्स। नाउ एक दूसरा मैं दिखा रहा हूं कि अनट्रीटेड प्लांट्स और अनट्रीटेड प्लांट्स, आप दोनों देखेंगे ये डिफरेंस 12 डेज का है। से वो नैनो फर्टिलाइजर्स को हम वेस्ट एक्सेल से डालते हैं, तो ये ज्यादा नहीं 10 डेज का अंतर है, और 10 डेज के अंतर में देखें इस तरह से चीजें होती हैं, और इको फ्रेंडली है, नेचुरल है, कोई सिंथेटिक नहीं है ना, किसी तरह का आर्टिफिशियल्स नहीं है जिसको हम फेंकते हैं, उससे हम इसको फंक्शनल मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फर्टिलाइजर्स obtained from various sources and the synthetic fertilizers, what is the difference? कहते हैं कि जितने तरह के फूड आज हम खा रहे हैं वो पूरे हार्मफुल है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया है ना, हमारे सिस्टम्स में मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजन इज डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड इन द प्लांट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। तो ये जो हमारे प्लांट्स का ग्रोथ है, ये इस तरह से इतने सारे हमारे डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, जो डिक्रीज फर्टिलिटी, ये फूड क्वालिटी को चेंज करता है, सॉइल सैलिडिटी को चेंज करता है, ये हार्डनिंग ऑफ द सॉइल्स करते हैं। बट आवर मटेरियल्स दैट वी हैव नेचुरल प्रोडक्ट, तो जनरली प्रॉब्लम इस प्लांट्स क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण ये सारे फेनोमेनन होते हैं जो फ्रूट्स में, प्लांट्स में आप देखते हैं जनरली, है ना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी की टीम ने मुझे कहा कि आप किसी मिनिस्ट्रियल एरिया में इस एक्सपेरिमेंट को करके मुझे दिखाइए, बिकॉज द नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर इज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, है ना। उनके सहयोग से ही हम बिहार में नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर से एस्टैब्लिश किया था, अभी भी कर रहे हैं उसको, काम कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट मैंने पहले दिखाया, दिस इज द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के आसपास का रिजल्ट है, किसी मिनिस्टर्स के कैंपस का। तो ये सारी चीजें जो हैं कैल्शियम की कमी के कारण जनरली प्लांट्स में आते हैं,
और हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को जनरली यूज करते हैं। अब ये है द प्रॉब्लम विद एंजाइम से होता क्या है, ये सब चीजें, वही चीजों का एक्सटेंडेड पार्ट्स में बता रहा हूँ। अब है रोल ऑफ कैल्शियम्स क्या है, इसके प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है, उसके हार्डनेस को बढ़ाता है, स्टेम्स को मजबूत करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, ये जनरली रोल ऑफ कैल्शियम है। बट अभी तक जो प्लांट के रूप में नैनो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, दीज आर द मेनली नैनो कार्बन ट्यूब, जिंक, Fe कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, TiO2 कॉपर ऑक्साइड, मल्टीवॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये सारे दीज आर द नैनो पार्टिकल्स आर बीइंग यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर या ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। बट द मैटर, द रिसर्च, the innovation that I am going to present is the material, natural material that was prepared eco-friendly, very low cost method, and that are waste. We can convert waste into wealth and knowledge based on the vocal for local research concept. Our Prime Minister Honorable Narendra Modi ji always कहते हैं vocal for local research, है ना, कि हिंदुस्तान को अपने आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो we have to focus on that property local for। तो एक सेक्शन जो मैं अभी कहा, दूसरे सेक्शन पे मैं आ रहा हूं कि उस अंडे की छिलके से आयुर्वेदिक डॉक्टर मेडिसिन बना के ऑलरेडी बेचते हैं, दैट आर ऑलरेडी प्रोडक्ट इन द मार्केट, रिसोर्सेज आर अवेलेबल, देयर इज ए गैप बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द कमर्शियलाइजेशन, रिसर्च गैप, what are their physical property, chemical property, biological property and other functional property, उस गैप को भरने की कोशिश हम लोगों ने किया। एक फर्टिलाइजर का बिहेवियर लाया हम लोगों ने, और वी हैव ऑलरेडी 2 स्टार्टअप्स इन माय डिपार्टमेंट। हमें 2 स्टार्टअप्स हैं हमारे, 2 PhD स्टूडेंट्स को, वो दोनों कमर्शियलाइजेशन की काम की दिशा में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा था कि हम लोगों ने एक फंक्शनल प्रॉपर्टीज को लिया, दूसरे बिहेवियर को जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के लिए देखेंगे आप, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये अंडे के छिलके में कैल्शियम ऑक्साइड मटेरियल पूरी दुनिया में जो बनाए जा रहे हैं सिंथेटिक प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, जिससे वातावरण पॉल्यूट होता है, हमने सेम प्रॉपर्टी को लाया यूजिंग लेमन, एलोवेरा और बटर मिल्क मिला के। आप देखेंगे मैं वो लेमन एंड एलोवेरा लिखा हूं बिकॉज द लेमन यूज एज ए इंग्रेडिएंट, एलोवेरा यूज एज ए इंग्रेडिएंट, हमने बटरफ्लाई भी यूज, बटर मिल्क भी यूज किया है, वो मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, कि सेम प्रॉपर्टी, ये जो वीक फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है जो स्पिनेट्रॉनिक्स में एप्लीकेशंस में होता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स बिहेवियर को भी ये वेस्ट मटेरियल में मिलता है। अगर हम और ज्यादा स्टडी करें और वाइड जाएं इसमें, तो वेराइटीज ऑफ न्यू एप्लीकेशंस वी कैन ऑब्टेन, नोबडी नोज क्या आएगा, है ना, ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं वीक फेर। अब ये देखें, दिस इज द हाई एनर्जी बैंड। अभी सेमीकंडक्टर, बहुत सी में कंडक्टर इकोसिस्टम की चर्चा बहुत विस्तार से हो रही है चारों तरफ, है ना, और ये सेमी हाई एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर, वी विल सरप्राइज, वी हैव ऑब्टेन 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड गैप इन दैट मटेरियल। भरत सर, हमने अभी 6.5 भी मिला जब हमने उसमें बटर मिल्क मिलाया। तो अभी तक जो रिपोर्टेड वर्क है, दैट इज 3.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैल्शियम ऑक्साइड का एनर्जी बैंड गैप बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी, जो कि केमिकली लोग बनाते हैं, और हमने वेस्ट मटेरियल्स, उस मटेरियल में हाई एनर्जी बैंड गैप की हमारी टीम ने मिला, और ये हमने हाई एनर्जी बैंड गैप मटेरियल पे हम लोगों ने पेटेंट कर दिया है थर्मिस्टर एप्लीकेशंस के लिए, है ना। तो इस वेस्ट मटेरियल के अंदर देखें, ये तीसरे बड़े गुण क्या मिल रहे हैं, हाई एनर्जी बैंड गैप भी हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का भी गुण है, मेडिसिन का भी गुण है, वाटर प्यूरिफिकेशन के भी गुण है ना। तो वेस्ट को वेल्थ में इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं हम लोग। और ये फोटोल्यूमिनेसेंस बिहेवियर, आप जो LED लाइट्स होते हैं और डिफरेंट तरह के ब्लू लाइट्स होते हैं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड में मिलते हैं, उससे अच्छी प्रॉपर्टी इस वेस्ट मटेरियल के में ये लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी मिलता है। दैट मीन्स ये फोटोल्यूमिनेसेंस के लिए जो मटेरियल यूज होता है, आप इस मटेरियल को इस नेचुरल वेस्ट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिसर्च। नाउ ये एंटी फंगल बिहेवियर,
जो अभी प्रलय दास सर भी दिखा रहे थे, कहा जाता है कहीं कि वो अंडे के छिलके के पाउडर बना के कहीं बिहार के किसी एरिया में लोग हैंड वॉश भी करते हैं। वो करते हैं क्या, उसका रिसर्च है। That means we can connect this innovation with our scientific finding. These are the antifungal antimicrobial properties. ये इसको हमने कहा कि लेमन स्वरस से जो यूज करके आते हैं, आप थोड़े से 0.1 ग्राम उस कैल्शियम ऑक्साइड को हाथ पे डालेंगे तो वे हाथ आपके साफ हो जाए। These are the scientific studies already, है ना। और इसको लोग यूज करते हैं, ये ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन रिसर्च गैप को फिल कर, और ये उसकी एक जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो हैंड वॉश एक्टिविटी का, वो मैं दिखा रहा हूं। तो एक नैनो मेडिसिन के रूप में हैंड वॉश में भी इस सब का एप्लीकेशन हमें मिला गया। क्या वो जूम बंद हो गया, ये कुछ दिखा रहा है, स्टॉप एंड ज्वाइन। नहीं बढ़ रहा है, कोई बात कोई बात, कर लीजिए। नहीं बढ़ रहा है, हाँ अब बढ़ गया, तो रुक जाओ।